Hello everyone. In the last video we discussed about dynamic memory allocation. So in this video we'll discuss about bubble sort using dynamic memory allocation. So if we come to this topic, we'll cover the introduction, algorithm, example and the program of this bubble sort. Now coming to introduction, bubble sort is the simplest sorting algorithm that works by repeatedly swapping the adjacent element if they are in wrong order. यानी कि हमें एक comparison करना है एक element का with its neighboring element. On the basis of that comparison only, we will do the swapping if it is required. Otherwise, we will not swap. So one by one, each element is seen. Each element is compared with its neighboring element. Now, for that, we will compare each pair of adjacent element in the list and then swapping will be done. And repeat this process until all the array is sorted. So one by one एक एलिमेंट को उसके नेबरिंग से कंपेयर हम करेंगे, रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को जब तक सारे एरे के एलिमेंट्स आके कवर ना हो जाए. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास 4 एरे एलिमेंट्स हैं E, A, D, B. Let us name this as CH. CH हमारा एरे है जिसमें इंडेक्स वाली 0, 1, 2, 3 इस लोकेशन पे हमारे ये एलिमेंट्स हैं. पहले हम सिंपल इसका लॉजिक समझेंगे, फिर हम इसको डीएमए की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं और पॉइंटर की हेल्प से कैसे हम लिख सकते हैं वो हम बाद में समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम टू द लॉजिक. नाउ इन बबल सॉर्ट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ passes and in each pass there are certain number of steps. So passes और steps में क्या होता है, हर एक पास के एंड में one element comes at its perfect location in the sorted array. और steps की हेल्प से क्या होता है, हमारे कंपैरिजन होता है. कंपैरिजन जिसके बेसिस पे ही हमारा एलिमेंट जो है एट द एंड उसकी परफेक्ट लोकेशन पे जाता है. नाउ लेट अस स्टार्ट with the first pass 0. I'm starting the pass with number 0, right? हमारे पास इनिशियली एलिमेंट है E, A, D, B. ये एलिमेंट है. इनकी लोकेशन हम लिख देते हैं 0, 1, 2, 3. ये हमारी लोकेशन है. नाउ इफ वी स्टार्ट विद स्टेप 0, so when step 0 is there, 0th location element E is compared with the 1 location element A. On the basis of this comparison, is the swapping required? Yes, swapping is required. So we will swap these elements and A will come in place of E and E will come in place of A. Then D and D remains same. So in one step, one comparison is done. On the basis of comparison, one swapping is done. Right? Now let us come to the next step. Step 1. अब step 1 है तो one location वाला element हमारा compare होगा फिर उसके next element से, यानी कि 2 location element से, which is D. E will be compared with D. On the basis of this comparison, is the swapping required? Yes, because E should come after D during according to the alphabetical order. Right? Now on the basis of this, again, swapping will be done. D will come before, E will come after, and B will be at the end. Now, step 2. Next step है step 2. तो 2 location पे हमारा जो element है, फिर हम उसको compare करेंगे. The element present at the location 3. On the basis of this, again, B when compared with E, B should come before E. So, swapping is required. So, now our array will be A, D, B, and E. Now, I just said that after the end of first pass, one element is at its perfect location. So, E is at its perfect location where it should be in the sorted array. बाकी बचे 3 element अभी sorted नहीं हुए हैं. So, for the rest 3 element, we will move ahead to the next pass. That is pass 1. तो pass 1 में हमारे पास initially element है A, D, B, and E, right? E is already at its location where it should be in the sorted array. Now, तो 3 एलिमेंट के लिए हमारे पास कितने कंपैरिजन हो जाएंगे? अगर A को हम D से कंपेयर करें और फिर D को B से कंपेयर करें, तो 2 ही कंपैरिजन हमारे यहाँ पे पॉसिबल है. तो स्टार्टिंग विद द S0, स्टेप 0,
स्टेप 0 में 0 लोकेशन पे जो A है वो कंपेयर होगा 1 लोकेशन पे D एलिमेंट से. So on the basis of this, is the swapping required? A should come before D only. It attacks perfect location on the basis of this comparison. So no swapping is required. Now next step, next comparison. Next comparison is A, D, B, E is our array. So D will be compared with B. So B should come before D according to the comparison, according to the alphabetical order. So swapping is required. Now our array will be A, B, D, E. So this is our array at the end of this pass. So D after this pass, D is at its perfect location where it should be in the sorted array. E already था पिछले पास में अपनी परफेक्ट लोकेशन पे आ गया था, तो एक पास में एक एलिमेंट अपनी परफेक्ट लोकेशन पे आ जाता है वेयर इट शुड बी इन द सॉर्टेड एरे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पास, अब दो ही एलिमेंट बचे हैं जिनको अभी हमें चेक करना है वेदर दे आर इन द परफेक्ट ऑर्डर और नॉट. सो वी कम टू पास 2. नाउ स्टेप 0, इनिशियली हमारे पास क्या एरे है? A, B, D एंड E. 0, 1, 2, 3 इस लोकेशन पे. तो S0 में, स्टेप 0 में ये कंपेयर होगा, A कंपेयर होगा B से, 0 लोकेशन वाला एलिमेंट कंपेयर होगा 1 लोकेशन वाले एलिमेंट से. ऑन द बेसिस ऑफ दिस नो स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड. सो आर फाइनल एरे एक ही कंपैरिजन होगा क्योंकि दो ही एलिमेंट हमें यहाँ पे चेक करने थे वेदर दे आर इन परफेक्ट लोकेशन. सो A, B, D and E, this is the final sorted array. Elements C in the array CH at location 0, 1, 2 and 3. So what are the few observations that we can see from this? अगर हम ऑब्जर्वेशंस देखें, हमारी पहली ऑब्जर्वेशन, पास हमारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक चल रहे हैं? 0, 1, पास 1, then pass 2. So if I say the number of elements is n, here the value of n is 4 है ना, टोटल 4 एलिमेंट्स थे हमारे पास एरे में. So how many passes are there? How many passes are there? I can say n minus 1. यहाँ पे 3 ही पास है, which is 4 minus 1, right? Now, if I come to steps, how many steps are there? अब पहले पास में, हर एक पास में कितने स्टेप है वो अलग अलग है ना? Number of steps are different in each pass. So if I come to pass 0, how many steps are there? 3 steps are there, maximum steps are there. When the element that are there, 4 are there in the unsorted array, so 3 comparison are made on this basis. So here I can say 4 minus 1. I can say n minus 1, which is 3 steps. So for pass 1, if I calculate the steps, so here how many steps are there? 2 steps are there. So I can say 4 minus 2. I can write like this, n minus 2, which is 2 steps. Now pass 2, how many steps are there? 4 minus 3, यानी कि n minus 3, which is 1. 4 minus 3 is 1 here, right? This is the observation. So I can generalize it like this. If I say current pass is 0, so I can write n minus 1 minus 0. है ना? If current pass is 1, here the value is n minus 1 minus 1. I can write like this, n minus 1 minus 1. If the pass is 2, so here I can write n minus 1 minus 2. Right? This is the number of steps here. Now let us write the logic of this. So for this, first of all, there are certain number of passes. Passes हमारे शुरू हो रहे हैं 0 से एंड कहाँ तक चल रहे हैं हमने अभी कैलकुलेट करा, इट इज लेस देन n minus 1, है ना? अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं तो
लेस देन 3 तक चल रहा है, पास 0, पास 1, पास 2, है ना, लेस देन 3 तक चल रहा है, देन p plus plus. Now for each pass there are certain number of steps. So for the steps it is starting at 0 always, s0, past 1 में भी s0 से start हो रहा है, past 2 में भी s0 से ही start हो रहा है. Now where it is stopping, we calculated here earlier, n minus 1 minus the value of p, right? So n minus 1 minus the value of p, it is the value of total steps that are there, you know, in the current pass. Now, in each step, what we are doing, we are comparing. Comparing what? A current element with the neighboring element. So, if we write by pointer, क्योंकि हमें DMA से प्रोग्राम करना है तो pointer वेरिएबल लेना पड़ेगा. तो pointer की हेल्प से हम कैसे लिखेंगे? By the help of indirection operator. So indirection operator is also value at address operator. So value at address, address कहाँ पे है? CH plus S. This is the address. यहाँ पे 0 इंडेक्स है अगर तो CH plus 0, 1 इंडेक्स है अगर तो CH plus 1. और हर बार क्या हो रहा है यहाँ पे? CH प्लस S की वैल्यू कंपेयर हो रही है CH प्लस S प्लस 1 से, है ना. तो यहाँ पे S की वैल्यू 0 है अगर तो E कंपेयर हो रहा है A से, तो विद द नेक्स्ट एड्रेस. सो if it is greater than value present at the address CH plus S, if it is greater than value present at the address CH plus S plus 1. If it is so, we want to do swapping. For the swapping, we require a temporary variable. So temporary variable will store the value present at the address, which is CH plus S. Now we can replace the value which is present at CH plus S with the next value, यानी कि CH plus S plus 1. Now we can store CH plus S plus 1 value, we can store it from T. So this swapping will be done. So this is the logic behind bubble sort and how we can write using pointers. Now if we come to DMA, how we can initialize the array, declare the array using DMA, dynamic memory allocation, because we don't know how much memory initially we want to declare. So first of all, the number of elements we want to input, number of elements. So I'm taking variable n to denote the number of elements. So with the help of scanf, I can input it. Then after that, we can use malloc or calloc function for the dynamic memory allocation. So for using them, I require std lib dot h header file, standard library header file. By the help of this only, I can use either malloc function or I can use calloc function. So if I use either of them, what is the difference? In malloc, a single block is allocated, block of memory, and in calloc, multiple blocks of memory is allocated, which I want to allocate for the n number of elements. So we'll write down the syntax now. हमारे पास यहाँ पे character values हैं, character type की values हैं, तो I am taking similar character variable. अब एड्रेस हमारा ब्लॉक ऑफ एड्रेस हमारा यहाँ पे एलोकेट होता है, तो फॉर स्टोरिंग दैट वी रिक्वायर पॉइंटर वेरिएबल. सो कैरेक्टर एस्ट्रिक CH, दिस इज द पॉइंटर वेरिएबल फॉर द कैरेक्टर एड्रेस. नाउ CH will store, first of all, typecasting is required, char asterisk. Why it is required? Because from the malloc or calloc function, void pointer is returned. void pointer क्या होता है? Generic pointer जिसमें आपका डेटा टाइप डिफाइन नहीं होता. सो वी हैव टू डिफाइन दैट बाय यूजिंग टाइपकास्टिंग, char asterisk. दिस इज द टाइपकास्टिंग. Then malloc, within malloc we write the parameter which is total size of the block.
Total size can be denoted by the number of elements into size of the data type. Here the data type is char. So this will be allocating the address. So if E is present at the address 200, then next contiguous memory allocation 201, 202, 203 till 204. This block of 4 bytes will be allocated by compiler if I allocate by malloc. 4 bytes आपके allocate होंगी, then this 200, this is which is the base address. Base address. It will be returned. Where it will be returned? Where the malloc function is called. So where it is called, यहाँ पे हमारा address return होगा 200. So by the help of typecasting, we can tell the compiler कि हमारी किस टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर हो रही है, कैरेक्टर पॉइंटर की यानी कैरेक्टर वेरिएबल के एड्रेस की. तो 200 will be then stored in ch वेरिएबल. तो ch वेरिएबल में ये इनिशियल एड्रेस आपका स्टोर हो गया. Now we can access the memory space of 4 bytes by the help of index value. ये हम कैसे कर सकते हैं? अभी तक हम array में जैसे लिखते थे ch at index 0 अगर मैंने लिखा है तो पॉइंटर की हेल्प से हम उसको कैसे लिख सकते हैं? If I am denoting the address at ch with at index 0. So this will be ch plus 0. How? ch में वैल्यू क्या है? 200 है, which is the base address. If I add 0 to that, it will be denoting 200 only. Next, अगर एड्रेस हम लेते हैं ch at index 1, तो if I do arithmetic operation on this pointer ch plus 1 अगर मैंने करा तो 200 is stored in ch, then 1 denotes the next memory where it is allocated. After 1 byte it is allocated, so it will point to 201, which is the next address of this member A, right? With the help of that we can access using for loop. ठीक है, इंडेक्स वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक चल रही है? I is less than n तक, then I plus plus. तो 4 एलिमेंट्स है तो 0 से लेकर 3 तक आपके इंडेक्स वैल्यूज चल रही है यहाँ पे ch में ना, 0 1 2 3. Now if I have to input using scanf, so I will write like this. %c हमारा जो कैरेक्टर है वो हम इनपुट कराएंगे और कहाँ पे इनपुट कराएंगे? एड्रेस पे. तो एड्रेस हम हमारा कैसे डिनोट हम कर रहे हैं पॉइंटर की हेल्प से? ch प्लस i से डिनोट कर रहे हैं. तो पहली बार में ch प्लस 0, फिर नेक्स्ट टर्म में ch प्लस 1. तो ये एड्रेस ही डिनोट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एम्परसेंट ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, राइट? और अगर मुझे प्रिंटफ में कोई वैल्यू प्रिंट करानी है यूजिंग पॉइंटर, I can print like this %c within double quotes and by the help of indirection operator. This is also called value at address, a value at address operator. So value at address, which is in ch plus 0, ch plus 1 or ch plus I can say. No? I की value आपकी loop से denote हो रही है. So by the help of this only we can write. Now let us come to the program. So initially we require the pointer variable. So I have included the header file stdio.h, then stdlib.h, then starting our main function, n variable to input the size of array. Then with the help of malloc, I have allocated the memory in our character pointer, which is a, right? Then entering the elements of array with the help of scanf, I have input the value. Now there can be issues in inputting the value, inputting multiple character values. So by the help of getChar function, we can avoid that. We can instruct that I have to input next character also. So then starting with our logic for the passes, then the number of steps and comparison value at address, which is at a plus j, comparing it with the next element value at address, which is at a plus j plus 1. So if it is true, then only swapping is done with the help of pointer variable. Then after that, we can print whichever element we want to
print by the help of pointer variable again. So here how we can write value present at the address which is in A plus J. So if I execute this now, so if I execute this, the total number, suppose it is 7. Now elements in array B, H, A, C, Q, E, G. So the sorted array will be given as the result A, C, D, E, G, H, Q. So this is the sorted array which will be printed according to our logic. Thank you.